गुड इवनिंग ऑल द ट्रेडर्स आउट देयर। आज का दिन अनएक्सपेक्टेड लाइन रहा। वी हैड सीन द स्टैडल प्राइस रेंज जो कि 120 का रेंज बहुत कम है एक्सपायरी वाले दिन। और अगर आप देखने जाए, इफ यू सी टुडे एंड निफ्टी ऑन अ 15 मिनट टाइम स्टैम्प, जस्ट लेट मी चेक। कल का एक क्लोजिंग था, क्लोजिंग से नीचे 97 और क्लोजिंग के ऊपर 112, 120 था। आपको पता है स्टैडल प्राइस? तो देखिए बीच में मूव्स आएंगे, दैट व्हाट वी डिस्कस्ड इन द मॉर्निंग, बट स्टैडल प्राइस मार्केट ने तोड़ा नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस दैट टुडे? डिड एनीबडी नोटिस दिस? नाउ यू अंडरस्टूड द रेलेवेंस ऑफ अ स्टैडल प्राइस. These are the small things which will make you understand trading. So today was copybook of the studies that you explained today morning. Yes, Ashok, you're right. See, everybody was asking about the calculator. The calculator is over here. In the volatility measures rule, the video is updated. Over here, you can download the calculator. So this is the link to download it. Make sure everybody download it. So see, there are lots of things you have to understand. ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आपको स्टैडल प्राइस देखना है। अगर स्टैडल प्राइस ही 120 का है तो वोलेटिलिटी कहाँ है मार्केट में? और विक्स भी देखा, एकदम लो वोलेटाइल रिजिम में विक्स चल रहा है। सो these are the small things which we learn in these sessions. As I said, nobody's an expert out there, and that helps me fine tune my thought process around the price charts and then study the market and base my action accordingly. Okay, Ashok. So before we start, I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. 25 तारीख को देखते ट्रेंड क्या साइडवेज है, कैंडल पैटर्न क्या, एक बुलिश कैंडल दिखा है, रेजिस्टेंस का है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, सपोर्ट का है 50 डे मूविंग एवरेज पे, टेक्निकल स्टडी क्या, इट्स अ रेंज, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप मे नॉट मेक दैट मच सेंस, आज ही खत्म हुआ एक्सपायरी, थोड़ा बिल्डअप होने दो. So everybody now today, did you all understood the importance or relevance of straddle price? Till market trades within the straddle price, we call it as a range bound market. Break of straddle price is a trending move. Give me yes or a no. Yeah, I'll wait for your yes or a no, friends. And very less likes. Okay. So again, market now has done two things. Today it pierced up. Yesterday it was pierced down. But let's not get carried away by all these things. The two averages right now which are there, which I want you to follow, is the exponential 200 अभी तक निकले नहीं. You might be saying, so रोज एक चीज क्या बोल रहे हो सर? अभी तक जब तक उसका सिग्निफिकेंस है, हमें वही we'll have to just keep a watch on it. EMA is way up here today. No, sorry, this is Sensex. मैं निफ्टी में चला जाता हूँ. I don't know why I opened Sensex. Yeah, I have shared it in the link. You can see in the chat box above, Jai Hind Investments. This is where your link is, sir, to download. So now मैं एक बार एक्सपोनेंशियल मूविंग 200 दिन के एवरेज प्लॉट कर लेता हूँ. और मार्केट करीब करीब वापस से 200 एक्सपोनेंशियल पे आ गई. एंड टुडेज यू सी जो निफ्टी का कैंडल है, बार है, इसको हम बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग. और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न चार्टिंग, बार चार्ट, वी कॉल इट एज अ परफेक्ट अपवर्ड बार रिवर्सल. व्हाट डज इट मीन? परफेक्ट अपवर्ड बार रिवर्सल और पियर्सिंग का मतलब है प्राइस broke previous day's low, it broke previous day's high,
and closed above that level. Everybody got it? Why we are called is as a piercing and upward bar reversal? Give me a yes if you have understood this. I repeat, भाव ने कल का लो तोड़ा, तेजी वाले का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ. भाव ने कल का हाई तोड़ा, सब मंदी वाले का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? द बुल्स एंड द बेयर्स बोथ गॉट स्टॉप्ड आउट and market closed at the day's high. That's how the engulfing pattern or this gets formed, what we call a perfect upward bar reversal. So perfect upward bar reversal आया and we have this support, right? And we have this average. अभी एक चीज आपको ध्यान रखना from this. So the one which we are following is this part. करीब करीब एक breakout level पे close दिया. So which we can't ignore. सी आफ्टर एक्सपायरी वाले दिन इतना स्ट्रांग मूव के बाद एक पॉज भी आ सकता है. ओके, आई रिपीट, एक पॉज भी आ सकता है. सो बट वंस इट क्रॉसेस दिस, इट इज शोइंग दैट समथिंग positive is likely to happen or can happen, or as a trader you watch for that. Okay, एज ए ट्रेडर यू वॉच फॉर दैट. तो ब्रेकआउट एक दिन हुआ, बट देखिए ये एक्सपोनेंशियल एवरेज 24,400 जब तक नहीं क्रॉस कर रहा है ना, तब तक प्रॉब्लम है. आई जस्ट टेल यू व्हाई. सी हियर आल्सो देयर वाज दिस, ये साइडवेज कंजेशन था, इसका एक ब्रेकआउट आया, 2 दिन मार्केट चला, उसके बाद एक्सपोनेंशियल पे हिट लेके एक करेक्शन आया. तो इस बार में 200 डे को हम लास्ट 15 डे से वी आर जस्ट वॉचिंग इट. विल इट टेक आउट? लुक सो. ये बुलिश फ्लैग है और फॉलिंग चैनल है, उसका ब्रेकआउट विल हैव टू टेक सीरियसली. बट ब्रेकआउट नीड्स momentum also, so which we have to see it, let's say from RSI or anything which is turning up. और अगर कोई भी एक मोमेंटम इंडिकेटर में डाल लेता हूं, सो इट माइट, लेट्स सी, जनरली आई डोंट सी MACD इज इन अ सेल. देखिए इस तरह का जो मूव है ना, आपको जो मिलता है ना, एटलीस्ट सम ऑफ योर मोमेंटम ऑक्सीलेटर विच यू फॉलो हैज टू ट्रिगर अ बाय. यहाँ पे अभी तक आया नहीं है. दैट डज नॉट मीन इट मे नॉट कम. इंडिकेटर्स आर लैगिंग, जस्ट देख लिया एक बार. सो मार्केट इज नाउ पॉइज्ड फॉर अपसाइड और अ कंसोलिडेशन with respect to support at this low. Now मैं ये लो को अभी सपोर्ट क्यों ले रहा हूँ? डू यू नो दैट? सिंपल, अगर मैं लाइन चार्ट पे चला जाता हूँ, मार्केट हैज मेड अ सीक्वेंस ऑफ हायर लोस एंड हायर हाइस on a daily time frame chart. Can you see this? See, I am a classical chart person in which I don't ignore my Dow theory. So is it making sense to you all? Higher lows and higher highs? या हरप्रीत अभी ये सब इग्नोर करना पड़ेगा सर? यस. अभी मैं कैंडल्स पे जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं आज का कैंडल, भले कैश, देखिए कैश तो रहने वाला ही हरप्रीत, इसके साथ ही जीना है, तो इसको भी भूल के प्राइस पे ही फॉलो करते हैं. So higher lows and higher highs have formed, which is making us a bit positive with support at this low 24,000 का, which is way down. So intraday कल करेंगे. एंड जो आपको जो मोमेंटम चाहिए ना, वो एवरेज के ऊपर ही आएगा, 24,400 के ऊपर ही आएगा. जो इस तरह की आपकी स्विंग चाहिए, अभी तक यहाँ पे एक पड़ा हुआ है. सो वी कैन कॉल दिस एज अ रेजिस्टेंस. So market is attracting buying pressure at lower levels around 24,000. That's all we can conclude based on the Nifty charts. And always remember, the first sign of a higher lows and higher highs should never ever be ignored. Am I right or wrong? All the old timers will agree with it. I repeat, the first sign of higher lows and higher highs should not be ignored. The same way, the first sign of lower highs and lower lows should not be ignored. यहाँ पे क्या हुआ था सर ऊपर में? This was the low, this was the low, और ये low टूट गया था. So you had a lower high and a lower low, right? So that time also said, let's not ignore this, and you saw a decline from that level.
सी व्हेन द डिसीजन मेकिंग आपका होता है ना, द क्लासिकल डाउट टेक्निक इज अ अल्टीमेट एज फार एज द फर्स्ट साइन ऑफ अ बॉटम फॉर्मेशन इज देयर और कुछ होने वाला मार्केट्स में. That does not mean higher lows, higher highs does not tell you about momentum. बहुत जन क्या ट्रेंड चेंज को मोमेंटम के साथ क्लब करते हैं. सर डायरेक्शन अलग है, मोमेंटम अलग है, दोनों को मिक्स मत करिए. डायरेक्शन के साथ मोमेंटम कब आएगा? वो मूविंग एवरेजेस लाइक क्रॉस अबव 200 डीमा, वो हिसाब से हम देखते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? सो नेवर एवर कंफ्यूज डायरेक्शन विद मोमेंटम. डायरेक्शन में मोमेंटम एज्यूम मत करो कि डायरेक्शन है तो मोमेंटम आएगा. फाइन. So the direction of the market has changed in the context of higher lows and higher highs. That's Nifty. So now let's go to Bank Nifty. Start looking at some stocks also now. I ignore stocks when prices are falling, which is only long cash, but when prices are showing something, back to stocks. बैंक निफ्टी ने भी अगर आप देखो तो जो हमने मॉर्निंग में डिसाइड किया था, वी आर नॉट गोइंग टू अवॉइड और लीव इट, इज द 200 डे सिंपल. तो बैंक निफ्टी में अगर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज में अगर डालता हूं तो लेट्स सी हाउ प्राइसेस बिहेव टुडे. आज भी विपसॉ तो है ना वहां पे. सो इफ आई गो टू इंट्राडे, क्लियरली एक विपसॉइंग दिखा है. फाइन. सवेरे खुला उसके ऊपर, दिस इज व्हाट वी डिस्कस ने, एक लाइन ड्रॉप कर दो. उसके ऊपर when it crossed it gave you that 125, if it crossed down it gave you that 200 points. और क्या चाहिए आपको? So 200 DA में for Bank Nifty is still whipsawing. निफ्टी में एक नीचे काफी ऊपर है. सो ये whipsawing अभी रहेगा. I don't think it might go away tomorrow. So you'll have to live with it. But having said that, let's take the last low and mark a support. So अभी भी देखने जाओ तो रेंज है सर. But that's how, see, swing. See, when things get choppy, market is exciting from the day trading perspective. Once, but when the base is getting formed, or we see that basing hai, that's the time market gets very boring for swing traders. Getting my point? आज जो लिया 2% ऊपर था, आपको लगा कल बेचूंगा, पता चला क्लोजिंग में खाली आधा टका ही ऊपर है. All those things do happen in a bottoming out process, which happened here and which right now is happening. Right. So still market is in a choppy mode as far as swing is concerned, very clean mode as far as day trading is concerned. A positional trading point of view, market is in a dead mode. Right? The जो भी है is from day trading perspective or maximum overnight. Do you all agree, friends? और दो चार हमें आज और एक इंडेक्स देख लेते, which is निफ्टी आईटी. आईटी ने भी बॉटम पे से ऊपर आया. तो सब जगह इस तरह का कंसोलिडेशन चल रहा सेक्टर इंडेक्स में. सो लेट्स नाउ चेक निफ्टी ऑटो. बैंक्स तो देख लिया हमने. अगर सेक्टर इंडेक्स में कंसोलिडेशन है तो फिर देखिए ऑटो में भी ये लो पे हिट किया, एक कंसोलिडेशन है. निफ्टी फार्मा एंड रीड द वीकली सबस्टैक नोट. देखिए फार्मा में भी एक कंसोलिडेशन है. दिख रहा है सर आपको सेक्टर इंडेक्स में? If all the sectoral indices one by one are in a consolidation, but एक चीज मार्क करो, ये हमने फ्राइडे को ये चैनल डाला था, किसी ने अपने आप को यहाँ पे पोजीशन किया रहता है, you would have caught the lows. इसलिए मैं बोलता हूँ सेक्टर इंडेक्स के साथ टॉप डाउन अप्रोच करके look at stocks. Don't restrict your life to 50 points in Nifty and 100 points in Bank Nifty. थोड़ा अपना होराइजन एज ए ट्रेडर का बढ़ाओ. Right? So most of the markets have in a consolidation phase. Lower level test करके अभी ऊपर के लेवल की तरफ आ रहा है. So all these sectors I want you to see. अगर किसी ने सेक्टर इंडेक्स पे देखा रहता ना, लेट्स से फार्मा ये लो पे आया, आप एक स्टॉक्स दो चार स्टॉक्स देख लो, लाइक बायोकॉन 200 DA पे आ रहा है. If anybody is aware of it, we have done a top down approach. So this is Biocon, right?
So Biocon came at this support level. ये जो candle चला था यहाँ से, if I take 50%, and today's rise in Biocon was close to 2%. See, sometimes you can enter as a swing trader in a base, but if you think it's too much in a day, you can exit also. कहीं पे लिखा नहीं है. See, as a trader, you M to M profit or losses. If it makes you happy or if it makes you sad, exit the trade. Then move on to next. Is it making sense? तो इस तरह के आपको देखना पड़ेगा. अगर मैंने डॉक्टर रेड्डिस भी देखता हूँ, just give me a minute. Okay. Yeah, Dr. Reddy's the ahead of the pharma index has changed the trend to up. Okay. ऑटो भी इंडेक्स ऊपर आया. लेट्स चेक मारुति. सर स्टॉक्स देखना चालू करो. Maruti also came to the lower end of the channel. And at the lower end of the channel, there was this support. So see, you have done this session on top-down approach. What it did, it came to the support, and from there, Maruti did spike up. See, you'll not make 1%, 1.5% in index. It's too tough. उसके लिए बड़ा rally चाहिए. But a stocks which come as a designated support, qualified support, or a demand level, all it needs is a stable market to move at least 1 to 2% from that level. Agreed, friends? You can say yes, you can say no. इसलिए थोड़ा देखिए, आपको स्टॉक्स की तरफ देखना पड़ेगा. नहीं तो it's a 50 and 100 points Nifty and Bank Nifty, which does not translate into much of a percentage, right? So make sure you look at stocks, and these stocks का options भी liquid है. अगर इधर मैं 13,600 का ऑप्शन देखता हूँ, लेट मी गो एंड चेक. कॉल ऑप्शन 13,600. चलिए, आज तो एक्सपायरी होगी, नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं. तो काफी लिक्विडिटी थी. आर यू सीइंग दिस? जब सपोर्ट पे आया, इट वाज समवेयर हियर. ओके, यस, लेट मी जस्ट सी. यहाँ पे था. यहाँ पे भी 100 पॉइंट का मूव्स आया ऑप्शंस में भी. सो देखिए, लार्ज कैप और निफ्टी हैवी वेट स्टॉक्स जो रहते हैं, उसके भी ऑप्शंस लिक्विड है. या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. जय हिंद इन्वेस्टमेंट. देखिए, आप स्टॉक्स पे कब ध्यान नहीं देते हो? जब मार्केट गिर रहा रहता है ना, तो डोंट ट्राई टू फाइंड लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज इन स्टॉक एज अ ट्रेडर, or look for negative opportunities in the stocks in the futures. But when markets are stable, markets are sideways, markets are consolidation, then stock specific के जो charts रहते हैं, those moves start playing out slowly and slowly. And slow move in a stock is 1 to 1.5%. Right? So get into the habit and start doing it. So that's all from my side. This is where this thing is. I have sent you volatility measures. If you go to that page, जो कि मैंने यहाँ पे आपको डाल रखा है, I mean, I think discount today it's expired. Futures are at 4% discount. I'm not literate in that discount and premium. I just follow the charts and trade accordingly. So over here, if you go at the bottom, आपको जो Excel spreadsheet है, and this Excel spreadsheet is there. If you go over here, you will get to click download VIX calculator. Make sure everybody downloads it. Okay. Yeah, I mean, pardon me for that. Why? I'll try to find it out, and in tomorrow morning sessions I'll clarify. But on my own, can I say that why things can happen? I need to dig a bit deep out there. So that's all from my side. We'll meet again tomorrow at 8:45 in the morning.